कॉम्प्लेक्स नहीं है। अच्छा। स्विच ऑन योर कैमराज प्लीज एवरीवन। आज हम शुरू कर रहे हैं। वो तुमने कर लिया था ना, एमसीक्यू से मैंने करा दिया ना। आज क्या करना था, पीएनसी करना था ना शायद। हम्म। फ्रॉम पीएनसी एंड बायनॉमियल दिल बी। और जानवी, बहुत दिनों बाद नजर आई तुम क्लास में। क्या हुआ? Evening, sir. वन और टू क्वेश्चन इन एंट्रेंस, या तो एक। हाँ, दोनों एक जैसे ही है, मतलब क्लब्ड है। तो दोनों चैप्टर में से एक या दो क्वेश्चंस आते हैं मैक्स। वन क्वेश्चन और मे बी टू क्वेश्चंस, नॉट बियॉन्ड दैट। Suppose we have three letters A, B, and C. And the question is, दो question है. One question is that select two letters out of three letters. And the second question is arrange two letters out of three letters. One question is select two letters out of three distinct letters. And the second question is arrange two letters out of three distinct letters. So in how many ways we can select two letters? जब भी सिलेक्शन वर्ड होगा, like to select a committee or team or choose a team or a committee, it will be like order will not be important. अरेंजमेंट में ऑर्डर मैटर करता है, सिलेक्शन में ऑर्डर मैटर नहीं करेगा. ऑर्डर इज नॉट इम्पॉर्टेंट. तो सिलेक्शन में ऑर्डर विल नॉट मैटर, ऑर्डर इज नॉट इम्पॉर्टेंट. लेकिन व्हेन यू कम अक्रॉस वर्ड अरेंज, अरेंजमेंट में ऑर्डर इज इम्पॉर्टेंट. बिकॉज जब भी नंबर्स को अरेंज करना है या लेटर्स को अरेंज करना है, तो ऑर्डर तो मेक ए डिफरेंस. देखो, अगर मेरे पास दो नंबर हैं, तीन, 001, तीन डिजिट्स हैं, उनको मुझे अरेंज करना है. ये ये और ये कौन सा पसंद है तुम्हें? विच नंबर यू लाइक? 001, 010 और 100? 100. देखो, डिपेंड करता है. अगर हम रैंक की बात करें तो ये बेटर है. अगर हम मार्क्स की बात कर रहे हैं तो ये बेटर है. नहीं. सो नंबर्स के अरेंजमेंट में, लेटर्स के अरेंजमेंट में ऑर्डर हमेशा इंपॉर्टेंट होगा, वो मैटर करेगा. सो वेन एवर यू कम अक्रॉस arrangement of letters, numbers, it will be basically permutation. So you have to use permutation.
जब भी हमें अरेंज करना है लेटर्स को, नंबर्स को, विल बी परम्यूटेशंस। और जब भी सेलेक्ट करना है, चूज करना है, यू हैव टू यूज कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन कब यूज होगा? जब सेलेक्ट कर रहे हैं, चूज कर रहे हैं टीम को, कमिटी को, लाइक दैट, फिर ऑर्डर इज नॉट इम्पोर्टेंट। दो लोगों को सिलेक्ट करना है, सुरेश महेश। सुरेश को पहले ले लिया, फिर महेश को ले लिया, फिर महेश को, फिर सुरेश को, क्या फर्क पड़ता है? नहीं। क्यों? मेरा फर्क पड़ता है। तो सिलेक्शन में ऑर्डर इज नॉट इम्पोर्टेंट, लेकिन परमुटेशन में फर्क पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे तीन लेटर्स में अगर दो को मुझे सेलेक्ट करना है, आई कैन सेलेक्ट ए एंड बी, और बी एंड सी, और सी एंड ए। द आंसर इज थ्री वेज। तो तीन डिस्टिंक्ट लेटर्स में से आई कैन सेलेक्ट टू डिस्टिंक्ट लेटर्स इन थ्री वेज। कहाँ है तुम्हारी जोड़ीदार आज? नहीं। नहीं। हाँ, ऑनलाइन है तो नहीं अभी। अच्छा। And in the second case, when you want to arrange, AB would be different from BA. AC would be different from CA, and BC would be different from BC, CB. So there are six ways or six arrangements. So number of arrangements are six, whereas number of selections are only three. Because arrangement में AB would be different from BA, BC would be different from CB, and CA would be different from AC. In general, if you want to select R objects out of n distinct objects, the formula is this combination. NCR is n factorial over R factorial over n minus R factorial. This is number of ways or number of selections of R objects from n distinct objects. Number of selections of R objects out of n distinct objects. Whereas in this case, number of permutations will be always NPR. Number of permutations of R items out of n distinct items is n factorial by n minus R factorial. NPR basically tells us number of arrangements of number of permutations of R items out of n distinct items. दोनों ही केसेस में n has to be greater than or equal to R has to be greater or equal to 0, n is greater than or greater than 0. ठीक है? Now what is factorial? Factorial is continued product of n natural numbers. Continued product of n natural numbers is called factorial. जैसे factorial n क्या हो गया? n, n minus 1, n minus 2 till 3 to 1. For example, 5 factorial would be 5, 4, 3, 2, 1, 120. 4 factorial would be 4, 3, 2, 1, 24. 3 factorial would be 3, 2, 1, 6. 2 factorial would be 2 into 1, 2. 1 factorial is always 1. So continued product of first n natural numbers called factorial. एक और चीज, जैसे ये 4, 3, 2, 1. So this 4, 3, 2, 1 is basically 4 factorial. That means 5 factorial
can also be written as 5 into 4 factorial. As if you have taken 5 common from 5 factorial और 4 factorial बच जाएगा. Similarly, n factorial में से we can take n common. क्या बचेगा? n minus 1 factorial. That means n minus 1 factorial will be n factorial by n. So if we take n as 1, तो फिर क्या होगा? Will be 0 factorial equal to 1 factorial by 1. So 0 factorial is always 1. 0 factorial is 1, 1 factorial is 1, 2 factorial is 2, 3 factorial is 6, 5 factorial 120, 6 factorial कितना हो जाएगा? 6 factorial would be 6 into 5 factorial, 6 into 120. That is 720. फ्रैक्शन का और नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल इज नॉट पॉसिबल. ठीक है. फैक्टोरियल इज ओनली फॉर होल नंबर्स. बड़ा फैक्टोरियल ऑलवेज कंटेन्स अ स्मॉलर फैक्टोरियल. 10 फैक्टोरियल में 9 फैक्टोरियल कंटेन्ड होगा. 10 फैक्टोरियल से अगर तुम 10 बाहर निकालोगे तो 9 फैक्टोरियल बच जाएगा. 2n फैक्टोरियल अगर है, इफ आई टेक 2n कॉमन, देन विल बी लेफ्ट विद 2n minus 1 factorial. If you have n minus r plus 1 factorial, तो क्या कॉमन आएगा इसमें से? n minus r plus 1 पूरा आ जाएगा. क्या बचेगा? Like this. r plus 1 factorial will be r plus 1 common. We will have with r factorial. ठीक है. 6 minus n factorial अगर है तो मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ? 6 minus n. क्या बचेगा? 6 minus n minus 1. That is 5 minus n factorial. ठीक है. जैसे कि सपोज यू हैव 2 divided by 10 factorial plus 3 divided by 9 factorial is equal to x divided by 11 factorial. Can you tell me what is the value of x? टेन फैक्टोरियल 10 factorial, sorry. 2 by 10 factorial, 3 by 9 factorial and equal to x by 11 factorial. बड़ा फैक्टोरियल में छोटा फैक्टोरियल कंटेंड होता है. एलसीएम ले लो. 9 फैक्टोरियल कट जाएगा तो ये काट दो 9 फैक्टोरियल. So you can directly do it also. 9 factorial and 10 factorial में 10 factorial बड़ा है. So this would be 2 into 1. This divided by this will be 3 into 10. And this is x divided by 11 into 10 factorial. क्या आ रहा है? x equal to 32 into 11. यही है. So NCR is n factorial over r factorial into n minus r factorial. जैसे suppose I need to find 10C3. So it would be 10 factorial by 3 factorial, 10 minus 3, 7 factorial. कैसे सिंप्लीफाई करोगे? बड़े फैक्टोरियल को खोलो टिल गेट द स्मॉलर फैक्टोरियल. ये कट जाएगा. 10 into 9 into 8 by 3 factorial which is 6. ऐसे कर सकते हैं. ये इसका एक शॉर्टकट तरीका होता है. We can directly reach from this point to this point. कैसे?
ओपन दिस नंबर टिल दीज प्लेसेस, 10 को 3 प्लेसेस ओपन करो बाय 3 फैक्टोरियल, कैन डायरेक्टली डू इट. सपोज यू वांट टू फाइंड आउट 15C2, तो ओपन 15 2 places, 15 into 14 by 2 factorial. That's it. Suppose you have 20C3. So open 23 places, 20 into 19 into 18 by as many factorial. So you can directly use this also without using the formula. Question. Verify verify all these. करो. फॉर्मूले तो लगाना, दोनों साइड में फॉर्मूला अप्लाई कर दो. एनसीआर वाला फॉर्मूला यूज कर लो राइट साइड में भी. इधर किया ना फॉर्मूला, ये वाला. The RHS is NCN minus R. So it'll be n factorial. In place of R, you have n minus R factorial, and then n minus R factorial. This is n factorial, n minus R factorial, and this is n minus R plus n minus n plus R factorial. N cancels. So n factorial, R factorial, n minus R factorial, which is same as NCR. So it's a very important result. NCR is NCN minus R. Suppose you have 20C19. So I can use this formula. 20C19 would be 20C20 minus 19. So it will be 20C1, just 20. So NCR is always NCN minus R. Also,
if you have NCX is equal to NCY, it follows from that result only. Then either X will be equal to Y or N is equal to X plus Y. If NCX is equal to NCY, then either X is equal to Y or N is equal to X plus Y. हम्म, कौन सा वाला? हाँ, अब ये देखो, दिस टर्म इज बेसिकली n-1 CR-1। हाँ, हाँ, तो इसको ऐसे कर लो, दिस इंटू दिस वुड बी n फैक्टोरियल, दिस इंटू दिस वुड बी r फैक्टोरियल। हाँ, ये तुमने यहाँ गलती करी, r-1 भी आएगा, r+1 हो जाएगा ये, वो कट जाएगा 1 1। नहीं नहीं, ये तुम इसको खोलोगे ना, इसको खोला ना तुमने, तो दिस वुड बी नीचे n-1 माइनस r-1, फिर 1 1 कट जाता है, n-r आ जाएगा। वाले हो गए दूसरे। n by r into n-1 r-1 n-2 cr-2। I've taken the right side. So n by r, n-1 r-1. You can open this n-2 factorial by r-2 factorial. This would be n-2 minus r-2 whole factorial. N by r, n-1 over r-1. This is n-2 factorial. r-2 factorial. When you open this 2 will cut. Then you can club this term. n-1 into n-2 factorial is n-1 factorial. This into this is n-1 factorial. Similarly, this into this would be r-1 factorial. And this term is basically n-1 cr-1. So this is n-1 cr-1. And next time this and this will be n factorial, this would be r factorial, so ncr. इसको तुम जनरलाइज करके ओपन कर सकते हो, like if you have suppose 50c5, I can write 50 by 5 49c4. Take 50 common from here and 5 common from here. Next step, 50 by 5, take 49, 4, it will be 48c3. Next time, 50 by 5, 49 by 4, 48 by 3, it will be 47c2. Next, 50 by 5, 49 by 4, 48 by 3, and this is 47 by 2, 46c1. 46c1 would be 46. The same thing. Next result is extremely important. ये बहुत जरूरी है. This will be used a lot. नोट वाला तो था NCX, शायद हटा दिया मैंने, वो हटा दिया शायद मैंने.
वो ये था एन सी एक्स इज इक्वल टू एन सी वाई इफ यू हैव एन सी एक्स इज इक्वल टू एन सी वाई देन x is equal to y or n is equal to x plus y. If ncx is equal to ncy, then either x equal to y or n is equal to x plus y. क्या आ गया? तुमने एलसीएम नहीं लिया? ये तो क्या किया ये तो गलत हो गया। आर माइनस वन है ये तो। ये आर माइनस वन तो आर माइनस वन आएगा यहाँ पे। ये एन माइनस आर प्लस वन हो जाएगा। थर्ड रिजल्ट इज इम्पॉर्टेंट। डन मेरा? बोर्ड पे करो। The third one, you can start from LHS. NCR plus NCR minus 1. So apply the formula n factorial by r factorial n minus r factorial. NCR minus 1 would be n factorial by r minus 1 factorial n minus r minus 1 factorial. You can take n factorial out. So 1 over r factorial n minus r factorial. This is 1 plus 1 over r minus 1 factorial n minus r plus 1. Now the bigger factorial contains the smaller one. R factorial में r minus 1 factorial contained है, n minus r plus 1 में n minus r factorial contained है. So if you want, you can simplify it further, like, or else you can make the smaller factorial equal to the bigger factorial. हाँ वो कर सकते हो, or else you can open the bigger factorial. वो भी हो सकता है. One thing is that I open the smaller factorial. R को I write r into r minus 1 factorial. Similarly, this I take n minus r plus 1 common, and this is n minus r factorial. Then you can take out r minus 1 factorial and n minus r factorial out. So this is 1 over r plus 1 over n minus r plus 1. Now take LCM and again multiply. So this is n factorial. This is r minus 1 factorial. This is n minus r factorial. So when you take LCM, it will be r into n minus r plus 1. So n minus r plus 1 plus r. R and R cuts. So when you multiply n plus 1 into n factorial, it will become n plus 1 factorial. R into r minus 1 factorial will become r factorial. N minus r plus 1 into n minus r factorial will become n minus r plus 1 factorial. So numerator is n plus 1 factorial. This is r factorial. This is n minus r plus 1 factorial, which is the right side, n plus 1 CR. Or else we could have directly taken LCM. R
and r minus 1, LCM would be the bigger factorial. N minus r, n minus r plus 1, n minus r plus 1 would be the LCM. Out of 2 factorial, bigger factorial is always LCM. It contains a small factorial. So this term divided by this, r factorial cuts, n minus r plus 1 factorial by n minus r factorial would be n minus r plus 1. Then plus sign. This LCM divided by this will be r. And then straight away. Okay? Now, how to use this result? That's more important. NCR plus NCR minus 1 is n plus 1 CR. You can use this result only and only if this number is the same. It should be the same. And these two should be consecutive. N should be the same and the other two numbers should be consecutive. क्या हुआ इसमें? ठीक है, समझ में आ गया? वो मैंने डायरेक्ट किया था. तो उसको यूज कैसे करना है? व्हेन यू हैव दिस नंबर द सेम एंड दिस शुड बी कंसेक्यूटिव. आंसर क्या आएगा? Whatever is this number, you add 1 here, and out of these two, whichever is greater will be here. Like if you have 50C5 plus 50C6, answer would be 50 plus 1 and C6. N should be the same. Then only you can apply this result. क्या वो ठंड लग रही है? हाँ, गर्मी लगना ठीक है, वरना बीमार होने का टाइम है ये. दिवाली रखी रह जाएगी फिर. दिस इज यू हैव टू थोड़ा गर्मी को सहन कर लो. एसी चलेगा फिर ठंड लगेगी, और ठंड लगी तो बीमार हो जाओगे. हाँ, जैकेट. ठीक है, तो जैकेट ओढ़ लो, पहन लो. राइट, लेट्स डू सम क्वेश्चंस.
हम्म। हम्म। क्या एफर्ट्स का आंसर? हम्म। 28। n+2 फैक्टोरियल खोलोगे, विल बी n+2, n+1, n, and n-1. And this is 60 into n-1 factorial. This will cancel. Open n+2 factorial till you get n-1 factorial. Now, one method is you make it cubic equation, or else you factorize the right side. Factorize the right side. Rather than making cubic, factorize the right side, which is 5 into 4 into 3. Left side, where you have three consecutive numbers. The left side, you have three consecutive numbers. ये consecutive है. Right side में तीन consecutive आ गए. That means you can directly compare. This is equal to this. Thank you very much. So three consecutive numbers on the right side, three consecutive numbers on the left side. और इसको इससे करोगे तब भी वही आंसर आएगा, इसको इससे करो तब भी वही आंसर आएगा. क्यूबिक बनाओगे तो पागल हो जाओगे. तो n+2 n-1 कैसे होगा? n+2 के बाद n+1 होगा ना. एक एक कम होता जाता है ना. लाइक 10 फैक्टोरियल से 10 कॉमन लोगे तो 9 हो जाएगा 10. तो n+2 फैक्टोरियल से टेक n+2 तो n+1. फिर n+1 फैक्टोरियल से n+1 तो n टिल n-1 कर दिया हमने. और फिर क्यूबिक बनाओगे तो फिर तो पागल होना निश्चित है. ये तो इजी है, करो. डिवाइड करना है इसमें. वही तो है. हाँ, तो इसको उल्टा कर लोगे ना. हाँ बस. अब इसको इतनी प्लेसेस ओपन करो, इसको इतनी प्लेसेस ओपन करो, कैलकुलेट कर लो, वही आंसर आएगा. हाँ, अगर टाइम पास करना है, मन नहीं लग रहा है, टाइम पास ही नहीं हो पा रहा है एग्जाम में. हाँ, उसको फैक्टराइज किया राइट साइड में 6 6, या तो क्यूबिक सॉल्व करो, और एल्स राइट साइड में भी है 60 के फैक्टर्स हैं 5 into 4 into 3. 5 सबसे बड़ा नंबर है, 3 सबसे छोटा है, एंड दे आर कंसेक्यूटिव. सो लेफ्ट साइड इज 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स, राइट साइड 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स, सो n = 3 आ गया. नेक्स्ट. इसको ओपन नहीं की, इसको किससे काट दिया तुमने? मैं तो वो 2n फैक्टोरियल, वो n फैक्टोरियल कैसे कट जाएगा? मुझे मुझे लगा तुम रिवर्स पूछ रही हो. रिवर्स तो तुमने किया, तो रिवर्स भी तो नहीं किया. हाँ, रिवर्स किया तो, लेकिन ये n इससे नहीं कट सकता. मानो ना, ये 2 फैक्टोरियल, ये 4 फैक्टोरियल. हाँ. हम्म. हाँ, ऐसे ये बिल्कुल सही है. इस बार सही किया तुमने. डिवीजन मीन्स यू बेसिकली मल्टीप्लाई और रिवर्स रेसिप्रोकल करके. सेकंड हो गया सभी का? हो गया. मेरा क्या आंसर है? 6. ओके.
जैना, रैना, रैन, जानवी, वन। अविका, क्या रहा है? 6 ही होगा सर। हो Sir, गया। 6. ओके, so this is 2n factorial in the numerator. This is 3 factorial. This is 2n minus 3 factorial. So this would be 2 factorial n minus 2 factorial by n factorial equal to 44 by 3. You have to open the bigger factorial till you get the smaller factorial. 2n factorial, take 2n out, you'll get 2n minus 1. You take 2n minus 1, you're left with 2n minus 2. And finally 2n minus 3 factorial. 3 factorial is 6. And this you write as it is. This will cancel. Out of n minus 2 and n minus 2 is smaller one. N minus n common, n minus 1, and then n minus 2 factorial. This cancels. This is 44 by 3. Now, this is 2, 3 cancels. This 3 and this 3 will also cancel. So this is n, 2n minus 1. You can take 2 common from here, n minus 1. Divide by n minus 1 equal to 44. N cancels, n minus 1 also cancels. All right. So 2n minus 1 equal to 22. यही आ रहा है? टू एन माइनस में 11 आ रहा है। हम्म 2n माइनस में 11 आ रहा है। 2n minus 1 कहाँ पे? ऊपर ये, अच्छा, दिस वन ना। हम्म ठीक है। तो 2n minus 1 is equal to 11 ना। तो 2n is equal to 12, n equal to 6. ये अक्सर गलती होती है, 2n minus 1 equal to 11 तो 2n equal to 10। वो इट्स माइनस 1 है, वो जाके प्लस हो जाएगा। इसने यही किया है। 5 आ रहा है ना तुम्हारा, बिकॉज ये माइनस 1 विल गो दैट साइड बिकम प्लस। हाँ, अपनी, हाँ।
So you're not audible. See, if you apply factorial here, you'll go mad. Ncx equal to ncy, then either x equal to y or n is equal to x plus y. We have used. Hmm. हाँ, but it's very lengthy. वो ही करना है. हाँ. Here you have to use combination. कर लो. हम्म. कट जाएगा इसमें 2 तुम्हारा आ गया वो 5. जैसी करोगी सही कर रही हो. ये कहाँ गया तुम्हारा डिनोमिनेटर. दिस बाय दिस था ना, वो कहाँ है. नहीं नहीं, दिस नॉट प्लस. So this is 2n c3. 2n c3 means open 2n 3 places. 2n, 2n minus 1, 2n minus 2. I'm doing directly by 3 factorial into this is nc3. Open n 3 places. N into n minus 1, n minus 2 by 3 factorial equal to 12 by 1. So 2 into 2 into 2n minus 1 equal to 12. आंसर कितना आ रहा है इसका. 5. विच वन. अच्छा, राइट राइट राइट. So 2n minus 1 is equal to 3n minus 2. N equal to 5. हो गया थर्ड. थर्ड. कर लो. हाँ, क्योंकि ये क्यूबिक क्यों कर रही हो, काट दो ना उसको. नहीं नहीं, सेकंड टर्म कहाँ गई. ये ये कहाँ चला गया. कौन सा. फिर
इसको 3 प्लेसेस ओपन करोगे तब कटेगा n-3। ऐसे कैसे होगा? n-3 है, n इंटू n-1 n-2। एंड व्हाट अबाउट दिस? हाँ तो उसके बाद नीचे वाली टर्म कहाँ गई? ये वाली कहाँ गई? ये लिखो, उससे कट जाएगा ना ये। जैसे इसने लिखा ना, n से n काटो, n माइनस, अरे ये n-1 से ये n-1 कट जाएगा 2 टाइम्स। आ गया, नीचे ये रहा, n-2 बचेगा बस। थर्ड का क्या आंसर है? 5। थर्ड का 5 है। सर आई गॉट 5। हम्म। 5। रैंक तुम्हारा कितना, 6 आ रहा है? 5 ही है। 5 है। हाँ, कर दो थर्ड वाला, हटा दो उसको। मीरज में लास्ट वाला पूरा सॉल्व भी कर दिया। यस सर।16 - n हो गया ना वो। हम्म। एक मिनट रुको। आ गया यार। नेक्स्ट, आर को 2 डालो, उसमें समेशन है 2 to 5। The fourth question, you can open it by placing r is equal to 2. So it will be 23c4, r equal to 3, 22c4, then r equal to 4, 21c4, then r equal to 5, 20c4. And this term we can shift to the rightmost side so that we can use that formula, NCR minus 1. So इस टर्म को मैं राइट में शिफ्ट कर रहा हूँ, 20c5, and now we can club these two terms. Now we can use this formula, NCR NCR minus 1 is equal to n plus 1 CR. So 20c5 can be clubbed with 20c4. तो ये बन जाएगा 21c5, वो नेक्स्ट से क्लब हो जाएगा, एंड सो ऑन। हम्म। ये ब्रैकेट था ये। अच्छा, तो माइनस किया था, so 6, तो 14 हो जाता फिर।
नहीं तो ये तो +1 था ना, +1 होगा ना, ब्रैकेट है ना, ये +16, ये 16 - 1, इसको ओपन करना है, मैं उल्टा कर दिया। दिस इज 16 - n factorial, ये ओपन होगा, ये ओपन नहीं होगा। सो 20c4 + 20c5 वुड बी, हम्म, हाँ वो करते जाओगे, इसके बाद ये, फिर नेक्स्ट एंड तक आ जाएगा वो। तो 20, दिस विल बी नाउ 21, 4 और 5 से कौन सा बड़ा है, 4 5, then you add with this, now you can club this and this, 23c4, 20c4, so this will add up, will become 20c5, 22c5. Now you club this and this, हाँ, so this is 23c4, this and this will add up 23c5, final answer would be 24c5. So always have a look at the options. If the options are left like this, there's no point opening it, है ना। तो एमसीक्यू में हमेशा ऑप्शन पहले देख लेना, पता लगा ऑप्शन में ओपन नहीं किया है, 20 के टर्म में आंसर है, तो यू कैन लीव इट लाइक दैट, नहीं तो फिर ओपन कर लो। तो दिस फॉर्मूला इज बिन यूज्ड मल्टीपल टाइम्स, तो ये तभी यूज होगा व्हेन यू हैव द सेम नंबर एंड these number must be consecutive. So this was 20c5, this was 20c4, club these two. हो गया। This time you have to use formula of NPR. NPR is n factorial over n minus r factorial.
हो गया फर्स्ट. व्हाट इज द आंसर फॉर फर्स्ट? 3. करना अक्षरा. हो गया. तो मल्टीप्लाई क्यों करें, तो बताया कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं ये कंसेक्यूटिव नंबर है, ये बड़ा है छोटा है. तो यहीं पे खत्म करो ना किस्सा. 4 into 3, तो दिस इक्वल टू 4. तो लंबा हो जाएगा ऐसे तो बहुत. डोंट फॉर्म क्वाड्रेटिक. क्वाड्रेटिक बनाएंगे. कंसेक्यूटिव किया ना. हाँ. वो इजी होता है तरीका. अदरवाइज क्वाड्रेटिक फॉर्म करोगे, दो आंसर आएंगे, फिर एक को डिस्कार्ड करना पड़ता है कई बार. हम्म. 12 को फैक्टराइज किया, 4 into 3, दो कंसेक्यूटिव नंबर आ गए, फिर कंपेयर कर लिया. कटेगा इससे. पूरे नंबर से कट जाता है इससे. ये गलत नहीं हो गया? 50 - r बड़ा है 50 माइनस. टीम साहब, हम्म. तो फर्स्ट क्वेश्चन में एक सॉल्यूशन डिस्कार्ड कैसे करेंगे? किस वाले में? फर्स्ट फर्स्ट पे. क्वेश्चन। क्वाड्रेटिक क्या आ रही है? क्या वैल्यूज क्वाड्रेटिक से क्या वैल्यूज आ रही हैं? 3 और 4। 3 and 4. सो 4 भी वेरीफाई कर रहा है क्या? If I substitute 4 over here, it will be 3 into 2, 6 equal to 12. So 4 is discarded. If you see, if I substitute n is equal to 4, it will not be satisfied. सेकंड का क्या आंसर आ रहा है? 56 PR6 will be 56 factorial over 56 minus r minus 6 factorial, right? This is 54 factorial. This is 54 minus r minus 3 factorial. कॉम्बिनेशन यूज मत कर लेना, इस परमुटेशन. 41 आ रहा है. वही होगा.
चेक कर लो एक बार फिर भी. So this is 56, 55, 54 factorial. This is 51 minus r. This is 50 minus r. This is 54 factorial. 30800. This will cancel. Now you can open. 51 is 51 minus r into 50 minus r factorial. Divide by 50 minus r factorial is equal to 30,800. Divide by 56 into 55. I think it's divisible. 70, 10. Huh? This divided by this is 10. So 51 minus r equal to 10. R would be 41. यही है. नेक्स्ट. हो गया. क्या है नेक्स्ट का आंसर? Sir, I think 4. 4. यस सर, मेरा भी 4 आया. ओके. उसका अगला. क्वाड्रेटिक बनानी पड़ेगी इस बात को. और this is 2n plus 2. नहीं, n plus.
Then you can open 2n plus 1 is 2n plus 1, 2n, and 2n minus 1. N plus 2 would be n plus 2, n plus 1, n, and then n minus 1 factorial. We have to form a quadratic now. Two n plus 1 into 2. Quadratic. So 3n square. This is minus तो possible नहीं है ना फिर. So n equal to 4n minus 4 is the answer. Next. You see, npn is always n factorial by n minus n factorial, which is 0 factorial, this is 1. So npn is always n factorial. So 1p1 would be 1 factorial, 2p2 would be 2 factorial, 3p3 would be 3 factorial, and so on. कर लो. ऑडिबल नहीं है। क्वेश्चन हो गया लास्ट वाला. नहीं सर। करो करो. मेरा तुम्हारा हो गया. No, sir. अनुज, अविका, Do sir. सोचो, थिंक लाउडली. Start from LHS. This is 1 into 1 factorial, 2 into 2 factorial, 3 into 3 factorial, 4 into 4 factorial, n into n factorial. ठीक है, बीच की टर्म बाद में लिखना है घर पे. Let's do some cheating.
आंसर इज दिस। नहीं नहीं, इतनी ज्यादा भी चीटिंग नहीं करेंगे। सो वी हैव एन फैक्टोरियल 10, जबकि चाहिए n+1। सो लास्ट टर्म इज n, दिस आई कैन राइट एज n+1 -1। नो प्रॉब्लम। 1, this 1 I can write 2 minus 1 into 1 factorial. This 2, with your permission, I can write 3 minus 1 into 2 factorial. 3 I can write 4 minus 1, 4 factorial. Open the bracket and you get your answer. ब्रैकेट ओपन करो, थैंक यू वेरी मच हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में फोटो खींचना अलाउड नहीं है। ब्रैकेट ओपन कर लो, फैक्टोरियल की प्रॉपर्टी अप्लाई कर लो। नहीं आया? सर सब कुछ कट जाता है। हाँ, ये तो होता है बड़े बड़े शहरों में। कुछ तो बचेगा। सर सिर्फ n+1 फैक्टोरियल बचा। बस वही आंसर है हमारा। क्या हुआ, मम्मी ने डिनर पे नहीं बुलाया आज? मॉम घर पे है नहीं तो। चलो अच्छा है, पूरी क्लास करोगी आज तुम। पिछली क्लास में जल्दी भाग गई थी। यस सर। क्या कोई स्पेशल बना था? मुझे याद भी नहीं है क्या बना था। So when you open it, it's 2 into 1 factorial minus 1 factorial. Then it is 3 into 2 factorial minus 2 factorial. This is, ये क्या था? 3 था ये। 4 into 3 factorial minus 3 factorial. This would be n+1 into n factorial minus n factorial, ठीक है? Now, this is 2 into 1 factorial is 2 factorial. 3 into 2 factorial is 3 factorial. 4 into 3 factorial is 4 factorial. This will be n+1 factorial minus n factorial. देखो एक बार इतना। Now, all these terms will cancel. This is n+1 factorial. ऐसा होता है। ऑपरेशन सिंदूर 2 होने वाला है। सब कट गए, एक बचेगा बस। दिवाली के बाद तो सेव पटाखas विद ऑपरेशन सिंदूर 2। तो ये थे सारे बेसिक्स ऑफ पीएनसी। अब हम आगे बढ़ते हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स पे आते हैं।
हाँ, मिसिसिपी। वो बोर्ड एंट्रेंस में भी आया हुआ है वो। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। Suppose you can travel from city A to city B in three ways. One, two, three. And you can travel from B to C, city B to city C, in two ways. So in how many ways you can travel from A to C via B? 6. It will be 1A, it could be 2A, it could be 3A, or it could be 1B, 2B, 3B. 6 ways. So if some activity can be done in 3 ways and another activity can be done in 2 ways, so in total, the entire activity can be completed in 6 ways. So this is fundamental principle of counting. जैसे कि suppose you've been given alphabets, all 26 alphabets are there, and there's a question that form a 3-letter word with or without meaning, without repetition. In how many ways a 3-letter word without repetition of letters can be formed? तो कैसे करोगे? You've been given complete alphabet. You have to form a 3-letter word. First part, no repetition. तो 26 लेटर्स हमारे पास हैं। तो 20, ये वाला प्लेस 26 वेज में फिल हो सकता है। एक यहाँ पे यूज हो गया 25 एंड दिस इज 24। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग 3-letter word will be these many, 26 into 24 into 25. Yeah, we can also use permutation. 20, that is 26p3. Arranging 3 letters out of 26 letters. So 26p3 will give the same answer. 26 factorial by 26 minus 3 factorial. To 26 factorial by 23 factorial, which is 26, 25, 24. What if repetition is allowed? Yes. So in that case, it will be 26 into 26 into 26. So this was fundamental principle of counting, which either you can use fundamental principle of counting or you can use formula also. And then you come across restrictions also that, first letter is this, or, vowels together, consonants together, those kind of questions would be there. So arrangement of, लिख लिया? देखो फिर। क्या हुआ, एसी ऑन करना है क्या? नहीं करना, छोड़ो, बीमारी से बचे रहोगे, कोल्ड एंड फ्लू से।
लू तो नहीं लगेगी ना कम से कम? गर्मी में लू लग जाती है, इतनी गर्मी थोड़ी है। वो क्या होता है? हम्म। नदी के पास। जब गर्मी बहुत ज्यादा होती है ना, नदी के पास, नदी के पास पानी होता है। मिराज की बात कर रही है ये। वर्लपूल। ह्यूमिडिटी। ये गेम खेल रही है। Now suppose we have a word equation. The first question is, how many words can be formed by taking all the letters of the word equation? करो. How many words with or without meaning? 6, 7, 8, 9, 10 can be formed by using all the letters of the word equation. No restriction. पहले पार्ट में कोई restriction नहीं है. तो हम इसको फंडामेंटल प्रिंसिपल अकाउंटिंग से भी कर सकते हैं और फैक्टोरियल से भी कर सकते हैं. इफ यू नोटिस, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर? सो दिस एंड ऑल डिस्टिंक्ट, ठीक है. सो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 8 ways: 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ये होगा. और एल्स फॉर्मूला यूज करोगे तो क्या आएगा? 8p8, विच इज 8 फैक्टोरियल. सो यू कैन डायरेक्टली यूज द फॉर्मूला ऑल्सो. 8 फैक्टोरियल आंसर आ गया. सेकेंड क्वेश्चन. How many words will start from the letter E? Letter Q. Q ले लेते हैं. How many letters? How many words will start with the letter Q? एक ही लेटर थोड़ी अरेंज कर रही हो भाई. Q को तुमने फिक्स कर दिया यहाँ पे ना, वन वे से. अब रिमेनिंग कितने हुए? 7 लेटर्स बच गए. तो 7. So 1 into 7 factorial. You have fixed one letter Q. The remaining letters are 7. So the answer would be 7p7, which is 7 factorial. Q को फिक्स कर दिया ना वन वे से. वो रिमेनिंग कितने लेटर्स बचे? 7. 7 को 7 वैसे अरेंज कर दिया. 7c7, p7, सॉरी. नेक्स्ट लिखो. हाउ मेनी वर्ड्स विल हैव इन हाउ मेनी वर्ड्स कॉन्सोनेंट्स आर टुगेदर? कॉन्सोनेंट्स आर टुगेदर. जो वोवल नहीं होता वो कॉन्सोनेंट होते हैं. तो तो कौन? सिक्स कितना? सिक्स बोलो. 6 फैक्टोरियल. कॉन्सोनेंट्स को टुगेदर कर लेते हैं. कॉन्सोनेंट कौन कौन से हैं इसमें? ऑल कॉन्सोनेंट्स टुगेदर. तो ऐसे क्वेश्चंस में जिनको तो इकट्ठा करना होता है उनको वन मान लेते हैं, ठीक है. एंड देन यू हैव EUAIO. सो बेसिकली हाउ मेनी लेटर्स आर नाउ देयर? 6. इसको तो वन मान लिया ना. सो वी हैव टोटल नंबर ऑफ लेटर्स 6. सो 6 लेटर्स कैन बी अरेंज हाउ मेनी वेज? 6 फैक्टोरियल वेज. लेकिन ये QTN है, दे कैन ऑल्सो बी रीअरेंज्ड. QTN को भी तुम अरेंज कर सकते हो. NQT, NTQ. दैट इज 3 फैक्टोरियल. सो दिस इज द आंसर. QTN we have treated as 1,
but they can be arranged among themselves also, right? Then fourth part, all consonants never together. All the consonants never together. क्यों? वो इकट्ठे नहीं है। अभी तुमने किया था तीनों इकट्ठे हैं, तो इस बार क्या करो, टोटल परमुटेशन में से इनको माइनस कर दो। फ्रॉम द टोटल परमुटेशंस विच वाज 8 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ये आंसर आ गया। अब नेक्स्ट पार्ट दे रहा हूं, उसको ध्यान से करना। नो टू कॉन्सोनेंट्स टुगेदर। नो टू कॉन्सोनेंट्स टुगेदर। जो पिछला वाला पार्ट था इन दैट क्वेश्चन, ऑल थ्री वर नॉट टुगेदर, बट दिस टाइम इवन टू के नॉट बी टुगेदर। डिवाइड करके मानोगी। नो टू कॉन्सोनेंट्स टुगेदर, बिकॉज इस आंसर में देयर बी सम वर्ड्स में दो कॉन्सोनेंट इकट्ठे आ जाएंगे, वो भी नहीं चाहिए। वो भी कर सकते हो। हाँ मतलब वन ऑप्शन वो भी है, एक बताऊंगा अभी, गैप मेथड। सो ऐसे क्वेश्चन में जहाँ पे वह चीज़ों को इकट्ठा नहीं करना, हम उसको गैप मेथड से सॉल्व करते हैं। सो व्हाट इज गैप मेथड? हियर वी डोंट वांट कॉन्सोनेंट्स टू बी टुगेदर, तो सबसे पहले वॉवल्स को अरेंज करो। 5 वॉवल्स कैन बी अरेंज हाउ मेनी वेज? 5 फैक्टोरियल, बिकॉज रेपिटेशन इज नॉट देयर। अब कितने गैप्स बचे? क्या बात करी, 1 2 का 4, कितने हुए ये? 6 गैप्स आर देयर। तो इन दीज 6 गैप्स यू कैन फिल इन कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, तो फर्स्ट यू अरेंज वॉवल्स इन 5 फैक्टोरियल वेज। जो बीच में गैप्स बच रहे हैं वहां पे कॉन्सोनेंट्स को अरेंज कर दो। 6 गैप्स हैं, 6p, कॉन्सोनेंट 3 है। सो 5 फैक्टोरियल इंटू 6p3, 6 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल। सो डिवाइड, वो तो बाई चांस हो रहा है डिवाइड। डिवाइड एंड रूल। सो दिस इज द आंसर। बस सावन, ठीक है, दिवाली की छुट्टी है। राइट, एंडिंग द क्लास, सी यू नेक्स्ट टाइम सेम प्लेस। थैंक यू सो बाय सर। बाय। बाय सर। बाय।